Assalamu alaikum everyone. Right, so we will be continuing from where we left off. That is glomerular diseases. ठीक है, अब पैथोलॉजी पर आ जाते हैं. राइट, अब ग्लोमेरुलर डिजीज़ेज़ जो होती हैं ना, दीज आर एसोसिएटेड विद मेजर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स. This is one of the most important things. Major metabolic disorders meaning SLE, diabetes, amyloidosis and vasculitis. ठीक है, there are two types. There's primary glomerulonephritis and there's secondary glomerulonephritis. ठीक है. Now we have another term which is glomerulopathy. जब भी पैथी का वर्ड आता है ना, just know that there's no inflammation, because inflammation के लिए we use nephritis, right? But for pathy it shows us के this is without any cellular infiltrates, right? Now इसके बाद जो है, like there is like before jumping on to the disease, structure of the glomerulus is really important. ठीक है. So glomerulus में होती क्या चीज़ है? नंबर 1, सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है कैपिलरीज, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज. फेनेस्ट्रेशंस जो हैं वो बेसिकली व्हाट डू दे मीन गैप्स और होल्स. ठीक है, फेनेस्ट्रेशन जो होती हैं वो 70 to 100 नैनोमीटर्स होती हैं. एंड ड्यू टू दिस देयर इज़ मोर ईजी एक्सचेंज ऑफ द कंपाउंड्स बिटवीन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. ठीक है, कैपिलरीज के बाद द सेकेंड थिंग इज़ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन. नाउ दिस इज़ द मेन बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसकी 3 लेयर्स होती हैं. You don't need to remember this, but just for information, there's lamina rara interna, lamina densa और lamina rara externa. 3 layers होती हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन की. ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास we have the visceral epithelial cells which is also known as podocytes. Now podocytes जो होते हैं, these are foot processes. ठीक है, like I drew something of this sort. These are podocytes and they come off as like hands. ठीक है, इस तरह. ठीक है, एंड इन बिटवीन देम देयर आर लाइक स्लिट लाइक फिल्ट्रेशन स्लिट्स कहते हैं इनको. ठीक है, सो दिस इज़ प्रेजेंट ऑन टॉप ऑफ द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन. ठीक है, देन वी हैव 4 मेसेंजियल सेल्स और मेसेंजियल मैट्रिक्स. ये जो होते हैं सपोर्टिंग सेल्स होते हैं. ठीक है, दीज आर लाइक कॉन्ट्रेक्टाइल एंड दे हेल्प इन सिक्रीटिंग एक्टिवेटर्स, और जो है ये बेसिकली सपोर्ट करते हैं और प्रोलिफरेट भी करते हैं. ठीक है. अच्छा, नाउ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर. राइट, सो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ना, दैट मेक्स द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर. इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3.6 नैनोमीटर्स. उसमें भी फेनेस्ट्रेशंस. ये जो एंडोथीलियम होती है, एंडोथीलियल मेक्स अप द फेनेस्ट्रेशंस, और नेगेटिवली चार्ज होता है, दैट रिपेल्स द एल्ब्यूमिन. ठीक है, और इसको नेगेटिवली चार्ज इसलिए होना है क्योंकि प्रोटीन्स जो होते हैं वो भी नेगेटिवली होते हैं, एंड यू डोंट नीड प्रोटीन्स इन द यूरिन. राइट, तो ताकि वी कैन डिस्क्रिमिनेट द प्रोटीन्स. अब दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ द ग्लोमेरुलस. सबसे नीचे जो है, दिस इज़ द रेड ब्लड सेल्स. ठीक है, दिस इज़ द एंडोथीलियम ऑफ द फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज. नाउ द गैप्स इन बिटवीन दिस इज़ द फेनेस्ट्रेशंस, एंड ये जो होता है ना वो एंडोथीलियल है. दिस इज़ द RBC. ठीक है, तो दिस इज़ लेवल 1. उसके बाद जो है वो आता है हमारे पास, वी हैव बेसमेंट ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन. नाउ बेसमेंट ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में अगेन देयर आर लाइक 3 लेयर्स. ठीक है, 1 2 3 लेयर्स कौन सी हैं? लैमिना रेरा इंटरना, लैमिना डेंसा, लैमिना रेरा एक्सटर्ना. Right, and then we have podocytes. Now these things, these are like podocytes, these are foot processes. ठीक है, in between them are filtration slits. Right, और जो है ये ना, ये these are made up of visceral epithelium. ठीक है, and then we have the urinary process, the urinary space, and then we have the parietal epithelium. So basically whatever substance are present in the blood, they will pass through the fenestrated capillaries, basement membrane, podocytes, फिर they will go into the urinary space. ठीक है. अच्छा, अब जो है ये पोडोसाइट्स के ऊपर ना 2 लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं विच इज़ नेफ्रिन मॉलिक्यूल्स, एंड ये जो है वो स्लिट की जो डायमीटर होता है ना उसको रेगुलेट करते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट की डायमीटर को. ठीक है, एंड लाइक विल लर्न मोर अबाउट दैम इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम के जब डायमीटर इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है, सो फॉर नाउ दिस इज़ जस्ट एन आइडिया कि इस तरह इस टाइप का होता है ऑल द ग्लोमेरुलस. Now moving on, pathological responses of the glomerular injuries. अगर इस वाली चीज़ को, अच्छा इसमें mesangium मैंने नहीं बनाया because mesangium is like present, mesangium is over here. ठीक है, इसमें भी देखो there are fenestration in the capillaries, फिर there is a basement membrane, the pink वाली. ठीक है, and then there is podocytes.
ठीक है, these are podocytes, food processes. और इसके दरमियान जो है this is like slit filtration slits, and ये visceral epithelium होता है, and then you have urinary space, and then you have parietal epithelium, और बीच में जो है ये mesangial cells होते हैं, right? Now coming on to the pathological responses of glomerular injury, इसमें तीन चीज़ें होती हैं. एक hypercellularity होती है, we have then we have basement membrane thickening, and then we have hyalinosis and sclerosis. Now what do these mean basically? Hypercellularity का मकसद meaning के there whenever there is injury ना, तो एक तो mesangial cells and endothelial cells, they will just start increasing, and they will increase in proliferation. फिर number two, there will be a lot of leukocyte infiltration because injury हो रही है, there is a lot of inflammation, तो they tend to go inside the glomerulus. Then we have crescent formation. Now crescent formation जो होता है, इसमें जो है वो immune और inflammatory injury अगर हो ना, तो procoagulants which are present in the blood, tissue factor, fibrin, तो वो activate हो जाते हैं और they basically cause crescent formation. We're going to learn all about this in the upcoming nephritic syndromes. अच्छा, दूसरी चीज़ होती है basement membrane thickening. थिकनिंग को हम देखते हैं PAS स्टेन, और यूजली ये होती है इससे बिकॉज ऑफ दी इंक्रीज अमाउंट ऑफ डेपोजिशन ऑफ द इम्यून कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, यूजली इट्स बिकॉज ऑफ दिस. और बाकी जो है वो अगर इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कॉम्पोनेंट ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाए, या इंक्रीज एडिशनल लेयर्स ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, दैट लीड्स टू बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग. Then we have hyalinosis and sclerosis. Now hyalinosis and sclerosis जो होता है, hyalinosis meaning कि accumulation of eosinophilic homogeneous material, pinkish material होगा, that will be known as hyalinosis. Then we have, and hyalinosis जो होता है usually it is a consequence of endothelial या capillary wall injury. और sclerosis जो होता है, that is deposition of extracellular collagen matrix. ठीक है, so this is it for the structure of glomerulus. I hope it made things easier.